Yes, students, welcome back. Now let's understand limitations of joint stock company. Limitations of joint stock company. We have completed till advantages in the last video. Now let's continue the limitations of joint stock company. The first limitation means disadvantages. क्या क्या नुकसान हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के? दैट इज़ वन, कॉर्पोरेट कंपनी, लेंदी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर. इनकॉर्पोरेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट. So whenever company is established, it's having lengthy and expensive procedure, because as I've explained earlier that memorandum of association and articles of association, these are the documents which is to be prepared and it is to be submitted to the registrar of the companies. And for preparing these documents, help of the experts is needed. Chartered accountant and lawyers, they are needed. Their help is needed and they will charge high fees. So expense will be more, and its incorporation procedure, after submitting the documents and following the procedures, it will take lot of time. So its procedure of incorporation is lengthy and expensive also. Now if we compare it with sole proprietorship, in sole proprietorship, as I've explained earlier in that chapter, that its registration is not compulsory. And in partnership also, partnership firm also, its registration is not compulsory. But in company registration is compulsory, and they have to follow the procedure of the formation of the company as per Indian Companies Act. Indian Companies Act के हिसाब से जो पूरा procedure है, they have to follow. They have to submit the documents, they have to get the documents verified from the registrar of the companies. Now registrar of the companies, registrar is the officer appointed by the government to look after the registration of the companies. तो registrar एक officer है. So in this way, for doing the registration of the company, for submitting the documents and for getting the help of the experts, paying large amount of fees to them, and it takes lot of time also. So this becomes one limitation or disadvantage if we compare it with sole proprietorship and partnership firm or cooperative society. Now the second point, legal restrictions. Now as just now we have discussed that its registration is compulsory as per Indian Companies Act 2013 or the act which was prevailing earlier. तो registration अगर हो रहा है, then it gets its separate identity. It is coming into existence by law. कानून के हिसाब से existence हो रहा है. So company has to follow legal provisions throughout its life. कंपनी को जब तक एग्जिस्ट कर रही है, वॉट एवर लीगल रूल्स रेगुलेशंस आर देयर, दे हैव टू फॉलो इट. स्टेटमेंट्स, दैट इज देयर प्रॉफिट एंड लॉस, देयर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, balance sheet and everything are to be submitted to the registrar of the companies regularly at certain time. So whatever accounts are there, accounts are to be audited and it is to be submitted to the registrar after certain regular interval time. Some provisions of SEBI, that is Securities Exchange Board of India, are to be fulfilled. Now SEBI is one governing authority who regulates the share market. स्टॉक एक्सचेंज को वो रेगुलेट करते हैं. एंड इन द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड वेयर डेली बेसिस पे परचेज एंड सेल इज कंडक्टेड. सो द कंपनीज हैज़ टू फॉलो सेबीज रूल्स रेगुलेशंस ऑल्सो, बिकॉज इट्स डेली बाइंग एंड सेलिंग इज कंडक्टेड इन द recognized स्टॉक एक्सचेंज. सो दे हैव टू फॉलो द सेबीज रूल regulations also. So much rules and regulations are to be followed by the companies. Now the third limitations, increase in administrative expense. Now the companies, they are run by the experts and many research and
development activities are conducted by the companies, and for conducting this research and development, and whatever officers are appointed, whatever managers are appointed, they are having the high salary. And because of these expert services and research and development activities, huge amount of expenses are done. That's why to run any company, its administrative expenses are more. जो कंपनी चलाने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. when we compare it with sole proprietorship, partnership firm or cooperative society, administration expense of this joint stock company is more. It's very high. Next limitation is autocratic management. Now let's understand what is the meaning of autocratic. Autocratic means when some persons they are ruling, कुछ लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं, दैट इज ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट. दो इट इज़ गिवन इन द लॉ, कानून में दिया हुआ है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं दे इंजॉय फुल राइट, मेनी राइट्स आर गिवन टू द मेंबर्स, बट दे इंजॉय नॉमिनल पावर. शेयर होल्डर्स दे इंजॉय वेरी लेस पावर. मोर पावर इज गिवन एज पर लॉ, बट प्रैक्टिकली उनके पास जो पावर होता है वो बहुत कम होता है. शेयर होल्डर्स जनरली दे डोंट, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स जिनके पास में शेयर्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स दे डोंट टेक पार्ट इन द AGM, दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग वेयर डिसीजंस आर टेकन. दे डोंट कास्ट एनी वोट्स, वो वोटिंग नहीं करते हैं वाइल डूइंग द इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो इन दिस वे no doubt as per law members have got more power, more rights, but it is not practically seen. Due to voting right per share, some person gets control through groupism and impose their desires. Voting right is per share, means जिसके पास में ज़्यादा शेयर्स है वो उसकी वोटिंग राइट ज़्यादा हो गई. सो द पर्सन, एनी पर्सन इज देयर हु हैज़ गॉट द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग्स. For example, if the person is having say 60% shareholdings of a company, he will do the management. He will do the management as per his own desire, because whenever he will cast any vote in any decisions, he will get the majority, because उसके पास में सबसे ज़्यादा वोट शेयर्स हैं, और ज़्यादा शेयर्स हैं मतलब उसका वोटिंग शेयर सबसे ज़्यादा है. So because of this there is less power given to the other shareholders, and in this way the person having majority of the shareholding can do the management on their desire, and they can use the assets, secret information, money for their personal interest and for their selfishness. Now the next point, that is next limitation or disadvantage, difficulty in maintaining secrecy. As I have explained earlier that legal restrictions are there. Whatever statements are there, reports are there, accounts are there, it is to be submitted to the registrar. So company has to get their final accounts audited, and it is to be submitted to the registrar of the companies and furnished to the members. It is also to be provided to the shareholders. तो शेयर होल्डर्स के पास में कंपनी की पूरी अकाउंटिंग डिटेल जा रही है, रजिस्ट्रार के पास में जा रही है, and it is published in the newspaper also. So then only the members will come to know, that is shareholders they will come to know. तो कंपनी कुछ छुपा नहीं सकती. Other certain information like redemption of debentures, कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किया था और जिन लोगों ने डिबेंचर परचेज किया था, कंपनी हैज़ टू डू द रिडेम्पशन, मीन्स रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर. दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो टू बी पब्लिश्ड. ये कंपनीज को पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा. कंपनी कांट मेंटेन इट एज अ सीक्रेट. एंड कंपनी इज, इफ द कंपनी इज इशूइंग बोनस शेयर्स, दैट इज ऑल्सो टू बी पब्लिश्ड एज पर लॉ. तो कंपनी कुछ भी छुपा नहीं सकती है. सो दैट्स वाई इट बिकम्स वन लिमिटेशन दैट कंपनी कांट मेंटेन सीक्रेसी. Now the next limitation is delay in decision
policy decisions. Now, if any decision is to be taken, consent of members, that is permission of members, is compulsory. It is essential in making policy decisions. And for taking of the consent of the members, meeting is conducted and one notice is given. Notice is given to the members before certain days. 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, whatever days are there decided by the company gives notice of the meeting to the members, and one resolution proposal is to be passed in the meeting. Whatever directors are there, whatever shareholders are there, they will be called in the meeting and they will pass one resolution. And after passing the resolution, then only any policy decisions is to be implemented and is to be taken. And for conducting meeting, calling the members, it requires lot of time. So that this is the reason that there is delay in decision taking. पॉलिसी डिसीजंस में बहुत ही डिले हो जाता है उसे इम्प्लीमेंट करने में और उसे फ्रेम करने में, एंड लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. सो दिस बिकम्स वन लिमिटेशन इफ वी कंपेयर इट विथ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी. सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली वन पर्सन इज द ओनर. जो भी डिसीजन लेना है उसके ऊपर है. आज वो कुछ बिजनेस कर रहा है, उसे लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कल को वो डिसीजन चेंज करके दूसरा बिजनेस कर सकता है. बट इफ़ द कंपनी इज़ टू बी closed, or if the company say not to be closed, if the company has to change the business and the company has to bring one new product in the market, then for that meeting is to be called and policy decision is to be taken, and it requires lot of time. That's why it becomes one limitation. Now less flexibility is there. It becomes one limitation, less flexibility. Lesser element of flexibility is there in the company form as compared to proprietorship and partnership, because any policy decision is to be taken, then resolution is to be passed in general meeting, and in certain activities approval of central government and court is also necessary. For example, if any company is there and the company wants to change its infrastructure, change its physical layout of the company, so the company has to take the permission of the court also, that the company is changing its physical infrastructure, physical layout, and the company wants to conduct new business. So central government permission and court permission is also to be taken. Now the next limitation, that is encouragement to speculation. Encouragement to speculation. Speculation is one kind of gambling. Artificial changes in the stock market encourage speculation. Stock market में, as I have explained earlier, that daily buying and selling of the shares is done. Purchase और sale होता है, कोई purchase करता है, कोई sell करता है. In this way, large number of transactions are done of the कंपनी शेयर्स. जो भी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है, सभी कंपनीज के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है. एंड इफ़ एनी आर्टिफिशियल चेंज इज़ डन, आर्टिफिशियल चेंज इन द सेंस कि कोई अपने हिसाब से प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहा है, आइदर इन द इंक्रीजिंग वे और इन द डिक्रीजिंग फॉर्म, दैट इज़ आर्टिफिशियल चेंज. सो दैट इज़ स्पेकुलेशन, एंड दिस स्पेकुलेशन कैन बी डन बाय द डायरेक्टर्स और द पर्सन who is having the information, secret information of the company. डायरेक्टर्स हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास में कंपनी की इनसाइड न्यूज़ है, इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्रेट इंफॉर्मेशन द चेंजेस इन द प्राइजेस, आर्टिफिशियल चेंजेस इन द प्राइजेस कैन बी डन. लेट्स टेक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, और उसे ये पता है कि फ्यूचर में कंपनी ऐसा प्लान ला रही है जिससे कंपनी को लॉस हो सकता है. इज इट क्लियर? कंपनी को लॉस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी को लॉस हो सकता है. सो व्हाट ही विल डू, ही विल सेल हिज लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स नेक्स्ट डे.
उसने दूसरे दिन बहुत ज़्यादा शेयर्स बेच दिए, व्हाट डज इट मीन्स? द प्राइस ऑफ द शेयर विल डिक्रीज कंसिडरेबली, प्राइस बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, और उस शेयर की प्राइस टूट गई तो नुकसान किसे होगा? स्मॉल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उसने तो हाई प्राइस पे बेच दिया, उससे तो फ़ायदा है। लेकिन प्राइस जब नीचे आ गई तो जिसने हाई प्राइस पे परचेस किया था, तो ज़्यादातर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस गए, जिन्होंने कुछ शेयर्स परचेस किया था कंपनी का। इन दिस वे, बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन, दैट इज़ आर्टिफिशियल चेंज of the prices in the stock exchange is done, it is not beneficial for the small investors. Disadvantages to the society. Certain disadvantages also there. Society has to become victim of strike of employees, lockout of the employers, etc. अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ की हड़ताल हो रही है, कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयर कंपनी के मालिक ने खुद लॉकआउट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन? प्रोडक्शन इज गोइंग टू अफेक्ट, कंपनी के प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा, एंड द सोसाइटी, दैट द कस्टमर्स, दे विल नॉट गेट द प्रोडक्ट, और इफ दे विल गेट द प्रोडक्ट, दे विल गेट इट एट द हायर प्राइसेस, बिकॉज सप्लाई चेन इज डिस्टर्ब. Monopolistic evils enter as more importance is given to capital than men. Monopolistic evils, what does it means? That if the company is there and if the company is having huge amount of capital and the company is only one player in the market to provide that service, so company will enjoy monopoly in the market. Monopoly means only one company is providing that product in the market. So company will decide the price as per his own desire, and the company will exploit the customers. So this is monopolistic evils. If monopoly is there, then society is going to be affected and customers, they are going to be exploited. Unequal distribution of income and wealth arises in society. As I have explained earlier, joint stock companies, they are collecting huge amount of capital and they are running the business on a large scale, and they are earning huge amount of capital, huge amount of profit. So with the help of huge amount of profit, they will create wealth, and in this way some group of persons who are running the big companies, they will get more income, and wealth is created, और यू कैन से इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सनस. कुछ लोगों के पास ही जो वेल्थ है वो इनकम जाएगी, और जो मेजॉरिटी, जो ज़्यादा पब्लिक है, उनके पास में इनकम उतनी नहीं जाएगी, बिकॉज दे आर हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दे आर मैनेजिंग इट. सो देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in the society, and it is one very alarming situation in the society and in the country if there is unequal distribution of income, which is prevailing in India at present. Thank you.